Kirtana. You can find it on your phones, Sri Nama Kirtana, also known as Yasomati Nandana. Yasomati Nandana Braja Baranhagara. We'll do the other book. That's another tune. We'll do the other two. Yasomati Nandana Braja Baranhagara Gokula Ranjana Ahanasa. Gokula Yasomati Nandana Brajabaranagara Gokula Ranjana Kahanasa. Gopi Parandandanam Hadhanam Manohara Gopi Parandandanam Hadhanam Manohara Kaliya Dhammara Vidhana Kaliya Dhammara Vidhana Hamala Harinam Hamya Vilasa Hamala Harinam Hamya Vilasa Vipina Purandara Navinana Gadavara Vamsi Vadanasu Vahasa Vamsi Vadana. Hey! Brajadana fallen Sudakulana Sana Bhajadana fallen Sudakulan Hasanam and Handa Godana Rakohala and Handa Godana Rakohala. Hey! Govinda Madhava Navanita Taskara Govinda Madhava Navanita Taskara Sundarananda Gopala. Hey, Sundarananda Gopala. Jamuna Tattachara Gopi Vasanoharam. Jamuna Tattachara Gopi Vasanoharam. Rasa Rasika Kripam Hoya. Rasa Rasika Kripam Hoya. Hey! Oh, Sri Radha Vallabha Vrindavana Nattabhadari. Sri Radha Vallabha Vrindavana Nattabhadari. Bhakti Vinoda Sraya. Hey!
Srila Bhakti Vinodhas Yasomati Nandana Brajavara Nagara Gokula Ranjana Hey, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hey, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Govinda Madhava Navanita Taskara Jamuna Tata Chag Gopi Vasanohara Sri Radha Valaloka Vrindavana Natta Bharati adi-purusham, adi-purusham, adi-purusham. Nithai Gaur Hari-bol, 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 Gaur Hari-bol. Yasomati Nandana Brajavara Nagara Gokula Ranjana Kana. Hare Krishna. His mother calls him Kana. I'm not coming. Don't want to eat. I want to play. Krishna likes to play. Everybody likes to play, but when you play in the material world, you get in trouble. So, the only place to play is with Krishna. Okay, so Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 23, the Brahmana's wives blessed, verses 31 and 32. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Which one's on there? 31 or 31? Shri Bhagavan Uvacha Pattayo Nabhyasuye Ren Prithibartru Sadadayaha Lokachavo Mayopeta Deva Apyanu Manvate. Shri Bhagavan Uvacha Pateo Nabayasu. I'm sorry. Pateo Nabayasu Yeran. Okay. Pateo Nabayasu Reyan. Hare. Prithabartru Sutadayaha Lokaschayo Mayopeta Deva Apyanu Manvate.
Shri Bhagavan Uvacha Shri Bhagavan Vacha Patayo Navayasuye Ram Patayo Nabhyasuye Prityabartu Sutadayaha Pitra Bhatru Sutadaya Lokaschayo Mayo Peta Lokasya Udomayo Beta Deva Apyanumanvate Deva Apyanumanvate Patayo Nabhyasuye Pitra Bhatru Sutadaya Shri Bhagavan Vacha Patayo Nabhyasuye Pitrubhatru Sutadaya Lokasya Vomayo Peta Devapyanumanvate Shri Bhagavan Vacha Patayo Nabhyasuye Pitrubhatru Sutadaya Lokasya Vomayo Peta Devapyanumanvate Shri Bhagavan Vacha Pitrubhatru Sutadaya Lokasya Vomayo Peta Devapyanumanvate. Ladies. Shri Bhagavan Vacha Pitrubhatru Sutadaya Lokasya Vomayo Peta Devapyanumanvate. Anyone else? Shri Bhagavan Uvacha Shri Bhagavan Vacha The Supreme Personality of Godhead said, Personality of Godhead said, Pataya, your husbands, Nabhya Asuyeran, Obviously will not feel inimical. not. Pitra Bhartru Sutta Adaya, your fathers, brothers, sons, and others. Loka, Loka, the general populace. general populace. Cha, Cha, also. also. Va, Maha, towards you. Maya, Maya, by me. Upata, Upata, upeta, advised. Deva, the demigods. Api, Api, even. Anumanvate, Manvate. regard favorably. So the wives of the the wives of the brahmanas are now inspired to give up everything and just come to the forest and be with Krishna. But Krishna is responding in this verse, this beginnings to his response of their uh, love for him in the way that they wanted to be with him. The Supreme Personality of Godhead replied, rest assured that your husbands will not be inimical towards you, nor will your fathers, brothers, sons, and other relatives of the general population. I will personally advise them of the situation. Indeed, even the demigods will express their approval. So Krishna is starting to gently send them back to their... Oh yeah, okay. भगवान ने उत्तर दिया,
तुम यह विश्वास करो कि न तो तुम्हारे पतिगण तुम लोगों के प्रति शत्रु भाव रखेंगे, न ही तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र, अन्य संबंधी जन या आम जनता। मैं स्वयं उन्हें सारी स्थिति समझा दूंगा। यहाँ तक कि देवतागण भी अपना अनुमोदन व्यक्त करेंगे। Verse number 32. For you to remain in my bodily association would certainly not please people in this world, nor would it be the best way for you to increase your love for me. Rather, you should fix your minds on me, and very soon you will achieve me. तुम सबों का मेरे शारीरिक सानिध्य में रहना निश्चय ही इस जगत के लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। न ही इस प्रकार से तुम मेरे प्रति अपने प्रेम को ही बढ़ा सकोगे। तुम्हें चाहिए कि तुम अपने मनों को मुझ पर स्थिर करो, और इस तरह शीघ्र ही तुम मुझे पा सकोगी। Is there anybody here who needs English? Anybody who has to hear English? No? All right, then just read the purport. Go ahead. भगवान ने संकेत किया कि सामान्य लोग नहीं चाहेंगे कि ग्वाल बाल के रूप में श्री कृष्ण तथा ब्राह्मण जाति की स्त्रियां के बीच ऐसा प्रेमाचार हो। साथ ही वियोग में ब्राह्मण पत्नियों की भक्ति तथा प्रेम में काफ़ी वृद्धि हो जाएगी। दूसरे शब्दों में, यदि वे अपने मनों को कृष्ण में स्थिर रहने दे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यह विधि जिसको वे अभी तक अपनाए चली आ रही है, आजीवन चलती रहेगी। भगवान तथा उनका प्रामाणिक प्रतिनिधि आध्यात्मिक गुरु भगवान के भक्तों को पटुता से विविध प्रकार की सेवाओं में लगाते हैं, जिससे वे शीघ्र ही उनके चरण कमलों में वापस लौट सके। Om Gyantimirandasya Gyanajana Salakaya Chaksu Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimakti Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gaudavani Pacharine Nirvisesa Sunyavari Pastyatya De Sitarine Panchakopa Taruvishya Viva Sindhu Pevacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namaho Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So the Supreme Personality of Godhead, Lord Shri Krishna, is already being criticized for dancing with the gopis who are wives of other men. भगवान श्री कृष्ण को पहले ही उनकी निंदा की है गोपियों के साथ नृत्य करने के लिए। So if he included the wives of the Brahmanas, he would be more criticized. तो अगर वो ब्राह्मण पत्नियों को भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं तो और ज़्यादा उनका निंदा होगा। When he's not speaking like that, he's saying, well, it's not best for you because, you are already married, you have families. The Brahmins are not bad people, they just don't know what to do. That's all. तो ब्राह्मण जो थे वो बुरे नहीं थे, सिर्फ उनको पता नहीं था कि क्या करना है। And so Krishna is very gently and carefully trying to explain to him that if you really want to develop your love for me, you can do it, but not in my personal association. तो भगवान कृष्ण उनको बता रहे कि अगर आप मेरी सेवा करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, मतलब अपने पर्सनल एसोसिएशन के अलावा उनको। We learned that there's two ways to worship the Supreme Personality of Godhead in devotion. भगवान को भक्ति में दो प्रकार से पूजा जा सकता है। One is called Vipralamba Seva, and the other one is called love in union, or what is Sambandha.
is it? Sambhog, yeah, okay. एक है Vipalamba विप्रलंब, Seva and Sambhog Seva. एक है विप्रलंब सेवा और संभोग सेवा, दो प्रकार से। So our whole movement centers around worshiping the Lord in the mood of Vipralamba or separation. तो हमारा पूरा आंदोलन भगवान का विप्रलंब सेवा में Sri Chaitanya Mahaprabhu taught that mood. चैतन्य महाप्रभु ने ये जो है विप्रलंब मूड Yugaitam nimeshena chakshusha pravishaitam shunyaitam shagat sarvam Govinda viramehiname. My dear Lord Govinda, just feeling your separation, every moment seems to be like 12 years. I'm feeling very emotionally distressed and I'm crying. And so he's praying like this. चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना कर रहे हैं शिक्षा अष्टक के एक एक क्षण उनको कई युगों के जैसा लग रहा है। Love and separation is always more intense in its loving a relationship, or more, what we say, intense, than loving in a personal way. तो विप्रलंब में महाराज कह रहे कि जो सेवा है वो ज़्यादा है जितु संभोग के साथ सेवा में। Because in that mood of loving Krishna in separation, one is always eager to meet Krishna. जब भगवान से विप्रलंब भाव में करते हैं तो उनसे मिलने का ज़्यादा तीव्र इच्छा रहता है। One is eager to be with Krishna. उनको भगवान के साथ रहने की और ज़्यादा इच्छा होती है। And in that mood, the intensity of that desire to be with Krishna increases that mood of love. तो इस भाव में फिर उनका और जो भगवान से मिलने का इच्छा और बढ़ते रहता है। It's like Prabhupada would say, he would explain how people think, oh yeah, I know Krishna, I'm with Krishna. You know, I saw Krishna last night, he came to me and he pulled on my sari. You know. He pulled on my dhoti. And he said, I'm here to be with you. So this kind of pretentiousness or imagination doesn't apply to devotional life. तो प्रभुपाद कहते थे कि जैसे पिछले दिन में रात को सपने में भगवान आए थे और उन्होंने मतलब धोती खींचा या इस टाइप से जो है ये सब भक्ति में नहीं चलता है। So our devotional service, the activities that we perform in devotional service, is a desire to be with Krishna. तो भक्ति में जो हम कार्य करते हैं वो भगवान के साथ रहने की इच्छा से करते हैं। Please Krishna accept my service. भगवान कृपा करके मेरी सेवा को स्वीकारें। I'm so fallen, I'm so unqualified, yet still I want to love you. मैं बहुत ही पतित हूँ लेकिन फिर भी आप मेरी सेवा को स्वीकारें। So we show our love by trying to serve Krishna in a way that pleases Krishna. हम भगवान को अपना प्यार बताते हैं उनसे सेवा करने के। And he's accepting our service. और वो हमारी सेवा को स्वीकार करते हैं। If it's done with bhakti. जब हम भक्ति से वो करते हैं। Bhakti amam bhajanati ma yavanyas tatvitatvatah. So bhakti is that way that attracts Krishna. भक्ति से ही भगवान को हम लोग आकर्षित कर सकते हैं। But bhakti in separation is even more loving, more intense, more feelings of love than when we meet Krishna. तो भक्ति जब विप्रलंब भाव में किया जाता है तो वो और भी गाढ़ी होती है जितना कि भगवान से एक्चुअल मिल के। The initial meeting with Krishna after the mood of separation is very strong. तो भगवान से जब पहले हम मिलते हैं तो ये बहुत तीव्र होता है। You see that even in the material world. ये हम लोग भौतिक जगत में भी देख सकते हैं। You see, I travel in the airports. जैसे महाराज ट्रैवल करते हैं एरोप्लेन से। So people are waiting for their relatives, their friends to come. तो लोग वहाँ पे राह देख रहे होते हैं अपने And then they see their father, their daughter, their friend. They get all excited and then they just run and they show some
emotion. Oh, it's so wonderful to be with you. They embrace and they're very happy. तो एयरपोर्ट पे जब मिलते हैं अलग अलग संबंधी लोग एक दूसरे से, तो हम देख सकते हैं कि वो कैसे एक दूसरे से मिलते हैं और बोलते हैं हम बहुत खुश हैं आपको देखकर. So that feeling of meeting after separation is so wonderful. It's so strong. तो दूर जाने के बाद वापस मिलने की जो भावना है, जो वो बहुत ही. But after a while, then they become familiar and they find fault with each other. कुछ देर के बाद फिर वो एक दूसरे से पहचान हो जाती है और फिर एक दूसरे में दोष देखने लगते हैं. Yeah. Well, with Krishna, we don't find fault, but the feeling of wanting Krishna is even more intense and more pleasing to Krishna than when Krishna personally appears. But he does appear to his devotee. तो भगवान कृष्ण भी ऐसे भगवान भक्तों के सामने आते हैं जब भक्त विप्रलम्ब भाव में उनकी सेवा करते हैं. He appears in the heart of his devotee, and he's happy to receive the service the devotee offers. तो भगवान भक्तों के हृदय में प्रकट होते हैं और जो भक्त सेवा कर रहे हैं उसको स्वीकारते हैं. He's not ungrateful. वो अकृतज्ञ नहीं है. But then he leaves right after that. Then he goes away. हाँ, वो वापस जाते हैं. Yeah. So we want him, and then he comes, and then after sometimes he goes, and we think, where did he go? तो हमें जब हम इच्छा करते हैं भगवान की, तो भगवान आते हैं फिर चले जाते हैं और फिर हम सोचते हैं कि अरे कहाँ गए भगवान. So Krishna does that with his devotees all the time. तो भगवान अपने भक्तों के साथ ये हरदम करते रहते हैं. Just to increase their love. सिर्फ उनका प्रेम बढ़ाने के लिए. So he wants to increase the love of his devotees by leaving, and that way they want him again. तो भगवान अपने भक्तों का प्रेम बढ़ाने के लिए वहां से चले जाते हैं ताकि भक्तों को फिर से भगवान को पाने की और इच्छा हो. Someone may ask, well, why did he do that with the gopis when the gopis' love is already perfect? There's no question of increasing their love. तो कोई पूछ सकता है कि भगवान ये गोपियों के साथ क्यों करते हैं, क्योंकि गोपियों का जो प्रेम है वो तो परमोच्च है, उसमें बढ़ाने की कुछ जरूरत नहीं है. The reason he did that is just to show the world what is real love. भगवान ऐसा करते हैं सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कि परफेक्ट लव क्या है. When Uddhava, Krishna's personal cousin and very intimate associate, saw the love of the gopis, experienced the love of the gopis, he offered beautiful prayers to the gopis. जब उद्धव गए थे तो उन्होंने गोपियों का प्रेम देखा तो वो भी आश्चर्यचकित हो गए. उन्होंने प्रार्थना की. Uddhava saw the love of the gopis, he thought, my love for Krishna is nothing. जब उन्होंने गोपियों का प्रेम देखा तो उद्धव ने कहा कि मेरा प्रेम तो कुछ भी नहीं है इसके सामने. And he had a lot of association with Krishna, a lot. और उनको कृष्ण भगवान का बहुत संग मिला था. And Krishna, that loving relationship was perfect. But when he saw the love of the gopis, he thought, well, I have no love for Krishna. तो उनका भगवान के साथ संबंध बहुत ही अच्छा था, लेकिन जब उन्होंने गोपियों का संबंध देखा तो उनको लगा कि मेरा भगवान के साथ कुछ भी संबंध नहीं है. So what is the love of the gopis? तो गोपियों का प्रेम क्या है? One day, Narada Muni was traveling. एक दिन नारद मुनि जा रहे थे. And he decided to go see Krishna. तो उन्होंने सोचा कि भगवान को मिलते जाते. Narada Muni, he travels around. He's the spaceman of the demigods. He travels everywhere. तो नारद मुनि सब जगह भ्रमण करते हैं. He plays on his veena. वीणा पे. Narada Muni bhajai veena rakika ramana naham, and he sings the glories of the Lord. भगवान के वो ग्लोरीज सब जगह गाते हैं. He can go anywhere in the material world and in the spiritual world. तो वो सब जगह जाते हैं, भौतिक और आध्यात्मिक जगह. So he came to see Krishna. तो वो भगवान को मिलने आए. And he said, he offered his prayers to Krishna. तो उन्होंने भगवान को प्रार्थनाएं की. Krishna welcomed him.
भगवान ने उनका स्वागत किया। Narada said to Krishna, "How are you, Krishna?" नारद मुनि ने भगवान से पूछा कि भगवान आप कैसे हैं? "Well, I have a headache." तो भगवान ने कहा कि मुझे सिर दर्द है। "Oh, really? A headache? That's not good. उन्होंने कहा कि ओ आपका सिर दर्द है, ओ ये तो अच्छी बात नहीं है। What can we do to relieve your headache?" तो हम क्या कर सकते हैं आपका सिर दर्द हटाने के लिए? "Well, there's only one cure. सिर्फ एक ही उपाय है। The dust of the feet of my devotees. आप मेरे भक्तों के चरणों की धूल लेके आइए। And if I get that dust, I put it on my head and my headache is gone." अगर वो मुझे मिलता है तो वो मैं अपने सिर पे लगाऊंगा और मेरा सिर दर्द चला जाएगा। Narada is thinking, who would give their foot dust to put on Krishna's head? तो नारद मुनि सोच रहे थे कि ऐसा कौन होगा जो अपने चरणों की धूल भगवान के सिर पर लगाने के लिए देंगे। So Krishna said, "You go find some devotees and get their dust." तो भगवान ने कहा आप जाइए और किसी भी भक्त को ढूंढिए जो ये चरणों की धूल दे। So he went to the sages of Namisaranya. तो नारद मुनि जो नैमिषारण्य के जो साधु थे उनके पास गए। And no, actually he went to the sadhus who are the associates of Lord Ramachandra. तो वो associates of Ram Bhaktas. ब्रह्मा जी। Ram Bhaktas, yeah. ओके, तो पार्षदों के पास गए उनके ब्रह्मा जी के। And they said, "Oh, Narada, you come." तो नारद मुनि आप आए हैं? "Yes. Why have you come?" आप क्यों आए हैं? "Well, Krishna has sent me to find his devotees because he has a problem. He needs his devotees to help." तो उन्होंने कहा कि मुझे भक्तों को ढूंढना है, उन भगवान कृष्ण को मदद चाहिए। "Oh, can we help?" क्या हम मदद कर सकते हैं? These were the sages of Dandakaranya forest. Yeah. The sages of Dandakaranya forest. हाँ, दंडकारण्य वर्ण के वो साधु थे। Yeah. So they said, "What can we do?" हम क्या कर सकते हैं? "Well, Krishna's got a headache." "Oh, really?" भगवान को सर दर्द है। अच्छा। "And he wants the dust from your feet to put on his head to relieve his headache." और उनको आपके चरणों की धूल चाहिए अपने सिर पर लगाने के लिए। "Narada, you're asking too much." तो उन्होंने कहा नारद मुनि आप बहुत ज्यादा मांग रहे हैं। "Our foot dust on the head of the Supreme Lord? No way." हमारे चरणों की धूल भगवान के सिर पर, ये संभव नहीं है। "Don't ask us anymore. ऐसा कुछ मत मांगिए। We'll go to hell." हम नरक में चले जाएंगे। Well, Narada was thinking, well, I have to try somewhere else. तो नारद मुनि सोच रहे थे कि मुझे और कहीं प्रयत्न करना पड़ेगा। I went to different sadhus and different devotees of Krishna. Nobody would give the dust. They all said the same thing, we're going to go to hell. तो वो सबके पास जो भी जिस भक्त के पास गए सबने यही बोला कि नहीं हम नहीं दे सकते हैं साधु। So Narada came back to Krishna and said to Krishna, nobody wants to give you their foot dust. तो नारद मुनि भगवान के पास वापस आए और कहा कि भगवान कोई नहीं देना चाहते आपको। They all say they're going to go to hell. उन्होंने बोला कि नरक में जाएंगे। And so Krishna said, well, go to the gopis of Vrindavan. तो भगवान ने कहा कि आप गोपियों के पास जाइए वृंदावन के। And so he went. और वो गए वहाँ। The gopis were there. गोपीज वहाँ पे थे। They said, oh, Narada, you come. आप नारद मुनि आप आए हैं। Where have you been? आप कहाँ गए थे? I was just with Krishna. मैं भगवान कृष्ण के साथ। Oh, really? How is Krishna? अच्छा, भगवान कैसे हैं? We're missing him. हम उन्हें मिस कर रहे हैं। Yeah. Miss कर रहे हैं। V for lumba. So Narada said, well, Krishna's got a headache. Oh, Krishna's got a headache. अच्छा, तो भगवान नारद मुनि ने कहा कि भगवान को सिर दर्द है। तो वो बोले अरे क्या भगवान को सिर दर्द है? That's terrible. हाँ, वो बहुत बुरी बात है। तो What can we do?
हम क्या कर सकते हैं? Well, Krishna said he wants the dust from your feet to put on his head and it will relieve his headache. तो भगवान ने कहा है कि आपके चरणों की धूल चाहिए जिससे उनका सिर दर्द दूर हो जाएगा, That's the only cure. और यही एक उपाय है। So the gopis start taking their bangles off and scraping dust and making piles. तो गोपियों ने अपनी चूड़ियों से अपने पैरों की धूल निकालना चालू किया। They make all these piles of dust. And they said, "Come on, Narada, hurry up, take the dust. Krishna's got a headache." उन्होंने ऐसा धूल का ढीक लगा दिया और नारद मुनि को कहा कि ले जाइए ये तुरंत। And Narada said, "Don't you know you'll go to hell?" क्या आपको पता नहीं है आप नरक में जाओगे? We don't care. We'll go to hell for Krishna. Come on, take the dust. उन्होंने कहा हमें परवाह नहीं है, हम भगवान के लिए नरक जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन लेके जाइए ये So धूल। Narada returned to Krishna. तो नारद मुनि फिर भगवान कृष्ण के पास गए And he understood that the love of the gopis was completely perfect. तब उन्हें समझा कि जो गोपियों का प्रेम भगवान के प्रति है वो परमोच्च है। They didn't care if they had to suffer in hell just to relieve Krishna's headache. उन्हें परवाह नहीं थी भले वो नरक में जाए, लेकिन भगवान का सरदर्द दूर करने के लिए वो तैयार थे। So when Krishna disappears from the gopis, it's not about increasing their love. It's simply about showing that their love is never lost, no matter what he does or what he doesn't do. तो भगवान जब गोपियों के बीच में से चले जाते हैं तो ये बताने मतलब उनका प्रेम बढ़ाने के लिए नहीं, बट ये बताने के लिए कि उनका प्रेम परमोच्च है। So this mood of serving Krishna in separation is very satisfying, both to Krishna and to the devotees. तो भगवान और भक्तों दोनों के लिए ये Because संतुष्टि है। just like it says, Krishna never leaves Vrindavan. जैसे भगवान कृष्ण वृंदावन कभी छोड़ के नहीं जाते हैं, But he did leave. बट वो छोड़ सकते हैं। When Akrura came to take Krishna out of Vrindavan to bring him to Mathura to kill Kamsa and to re-establish King Ugrasena on the throne. जब अक्रूर आए थे वृंदावन भगवान को ले जाने के लिए, कंस का वध करने के लिए और उग्रसेन महाराज को फिर से स्थापित करने के The लिए, residents of Vrindavan were in distress. Krishna is going to be leaving Vrindavan. तो वृंदावन के जो वासी थे वो बहुत ही दुखी थे कि भगवान कृष्ण यहाँ से चले जाने वाले हैं। But Krishna wanted to leave, so Akrura did his service of bringing Krishna out of Vrindavan. तो अक्रूर की ये सेवा थी कि भगवान को वृंदावन से लेके आए करके, But he didn't talk to the gopis at all. बट उन्होंने गोपियों से बात नहीं की, He didn't even speak to the gopis. उन्होंने कुछ भी नहीं बोला गोपियों से। And when the gopis found out that Krishna is being taken by Akrura out of Vrindavan, they were so anxious, so bewildered that they were going to do everything to keep Krishna. तो जब गोपियों को पता चला कि अक्रूर भगवान को वृंदावन से लेके जाने हैं तो वो बहुत ही So they ran in front of the chariot, so the chariot couldn't go. तो वो भगवान के रथ के सामने आ गए ताकि भगवान वहां से न जा सके। And of course, after some time, other people pulled them away, and then Krishna left with Akrura on his way to Mathura. फिर कुछ लोगों ने उनको वहां से रथ के सामने से हटाया, फिर भगवान अक्रूर के साथ वहां से चले गए। Now Akrura, he did his service. ये अक्रूर की सेवा थी। His service was to come and take Krishna out of Vrindavan, knowing that Krishna would kill Kamsa and re-establish spiritual rule in Mathura. तो ये सेवा ये थी उनकी कि वो वृंदावन आके भगवान को वहां से लेके जाएं और भगवान फिर कंस का वध करके। But the gopis were angry at Akrura for still taking Krishna. लेकिन गोपियां उनसे गुस्सा थी कि भगवान को वो वृंदावन से लेके गए। And they cursed him. एंड उनको शाप दिया। They cursed Akrura, yeah. They said, "You are not Akrura, you're Krura." तो उन्होंने कहा कि आप अक्रूर नहीं क्रूर हैं। Akrura means one who is very kind, and Krura means one who's cruel. You're not Akrura, you're Krura. So they cursed him.
तो अक्रूर मतलब जो क्रूर नहीं है, दयालु है, और क्रूर मतलब जो बहुत ही क्रूर है। तो उन्होंने बताया कि आप दयालु नहीं है, क्रूर है। बहुत. Okay. He did good on that one. Yeah. Thank you. And because of that, Akrura had to suffer later on and get involved in acting against Krishna when they stole the Samantaka jewel. तो इसके वजह से अक्रूर को बाद में जब समंतक ज्वेल जो था वो चोरी हो गया था, उस टाइम पे उनको बहुत ही तकलीफ हुई थी। So although Akrura did his service and Krishna wanted what he did, still he got in trouble. तो जो अक्रूर ने जो सेवा की, वो भगवान चाहते थे कि वो सेवा करें, फिर भी उनको तकलीफ हुई। Sometimes you're trying to do your service and nobody appreciates it. कभी कभी आप सेवा करते हैं और कोई भी उसकी प्रशंसा नहीं You're करता। doing your best and people criticize. आप अपना सबसे अच्छा कर रहे हैं सेवा, लेकिन फिर भी लोग आके आपकी निंदा करेंगे। Hare Krishna. What to do? तो क्या करना चाहिए? Just like when I travel, जब महाराज ट्रैवल करते हैं, every place I go, जब भी जहाँ भी जाते I हैं, get 2 more invitations for 2 other places. तो और 2 इनविटेशन महाराज को आते हैं दूसरी जगह जाने का। And if you say no, then they cry. अगर मना किया तो फिर भक्त नाराज हो जाते हैं And they curse you. और शाप देते हैं। If you ain't coming to my place, you can't go anywhere. अगर आप यहाँ नहीं आ सकते तो कहीं नहीं जा सकते। So, or they threaten you. तो आपको डराते हैं। So even if you try to do your service, always somebody will find some fault sometimes. तो अगर आप अपनी सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी कोई ना कोई उसमें कुछ ना But you still have to do your service. फिर भी आप अपनी सेवा करते रहिए। What can you do? That's Krishna consciousness. But Krishna appreciates. लेकिन आप क्या करना है? आप अपनी सेवा करते रहना है, यही कृष्ण भावनामृत है, और इससे भगवान खुश होते हैं। So in order to taste that happiness of service to Krishna in separation, one has to serve in such a way as to want to bring Krishna to come and accept my service. तो भगवान को विप्रलम्ब भाव में जो सेवा करते वक्त इस तरीके से सेवा करना है कि भगवान आके मेरी सेवा को स्वीकारें। Krishna, I have no qualifications to serve you, nor do I have any abilities, nor don't even have good desire, but I'm trying. भगवान मेरी कोई पात्रता नहीं है, ना मेरी मेरा कोई गुण है, लेकिन फिर भी आप मेरी सेवा को। And if we just try to serve Krishna the best way we can, thinking how to please Krishna, whatever service we can do, that is perfection. तो हमें सिर्फ हमारी जो प्रयास करना है अच्छे से अच्छा भगवान को खुश करने के लिए। So we are all in the mood of serving Krishna in separation from Krishna. तो हम सब जो हैं भगवान की सेवा विप्रलम्ब भाव में करते हैं। You might say, well, before you can develop a love for somebody in separation, you have to meet them first. अभी कोई बोलेगा कि किसी से विप्रलम्ब भाव में सेवा करने से पहले आपको उससे मिलना पड़ेगा। How can you love someone in separation if you never met them before? कैसे आप किसी से विप्रलम्ब भाव में सेवा कर सकते अगर आप उनसे मिले नहीं? So we hear about Krishna. तो हम कृष्ण के बारे में सुनते हैं। And by hearing about Krishna, we become attracted to Krishna. और कृष्ण के बारे में सुनने से हम कृष्ण के प्रति आकर्षित होते हैं। And as we hear more and more about Krishna और and serve Krishna by serving his devotees, then our attraction for Krishna becomes strong. और जैसे जैसे हम कृष्ण के बारे में सुनते हैं और उनकी सेवा करते हैं, उनके भक्तों की सेवा करते हैं, तो Although we can't remember being with Krishna in the spiritual world, still we can develop that love in separation. हमें ये याद नहीं है कि हम कृष्ण से कैसे आध्यात्मिक जगत में उनके साथ थे, फिर भी हम सेवा करके वो प्रेम आकर्षित करते। And that is the mood of Mahaprabhu. He taught that mood. Serve Krishna in the mood of wanting to be with Krishna. तो यही चैतन्य महाप्रभु का मूड था कि भगवान की ऐसी सेवा करो कि उनके साथ रहने की इच्छा रखकर।
Okay, so here Krishna is advising the wives of the Brahmanas that don't try to be with me, but you can love me simply from the position of your service. तो भगवान यहाँ पे ब्राह्मण पत्नियों को कह रहे हैं कि आप यहाँ पे मेरा सानिध्य के लिए मत कोशिश कीजिए, बट अपनी जो सेवाएं हैं उसको करते रहिए. And very soon, Krishna says, very soon you will achieve me. और इस तरह आप बहुत ही जल्दी मुझे प्राप्त करोगे. So we should always remain fixed in our devotional service. तो हमें हमारे भक्ति में दृढ़ रहना चाहिए. And one of the qualities of devotee is that they become patient. और ये भक्त का एक गुण है कि वो हरदम We're eager for Krishna to come and accept our service, but we're patient that he will come whenever he wants to come. हमें धीरज रखना चाहिए कि भगवान मिलेंगे और जब वो कृपा मिल आएगी तब. We have the example of Mukunda. मुकुंद का उदाहरण है हमारे One सामने. of the associates of Lord Chaitanya, he used to sing kirtan for Lord Chaitanya. तो मुकुंद जो है वो भगवान के लिए कीर्तन करते थे भगवान के. Lord Chaitanya was at the house of Srivas Thakur and he was giving benedictions to all his devotees. तो चैतन्य महाप्रभु श्रीवास पंडित के घर पे थे और सबको वरदान दे रहे थे. So, the devotees were asking for benedictions, but they were asking for benedictions not for themselves, but for others. तो भक्त जो वरदान मांग रहे थे वो खुद के लिए नहीं मांग रहे थे, दूसरों के लिए मांग रहे थे. So one devotee said, "Oh, please give Mukunda love of God." तो एक भक्त ने कहा कि भगवान मुकुंद को भगवत प्रेम दीजिए. And Lord Chaitanya became very silent. भगवान बहुत शांत हो गए. And he was very thoughtful. और बहुत ही वो Thoughtful. हाँ बहुत ही विचार मग्न हो गए. And then he became angry. और फिर बहुत गुस्से में आ गए. He said, "Mukunda, he's an offender. लेकिन मुकुंद वो एक अपराधी है. He's like a person who comes and worships your lotus feet and then takes a stick and beats you on the head." वो एक ऐसे हैं जो आके आपके चरणों का पूजा करते हैं और फिर एक लकड़ी लेकर आपको पीठ पे मारते हैं. Devotees were shocked. तो भक्त अचंभित हो गए. "Mukunda, he's so dear to you. He's always singing, you're dancing. कि मुकुंद आपको इतने प्रिय है, वो आपके लिए हरदम नृत्य करते रहते, गाते रहते हैं. How is it?" ये कैसे है? Well, he goes during the day, he goes out and he hears from other people on the science of karma and gyan as being equal to bhakti. तो दिन में वो जाते हैं और दूसरों से जो कर्म और ज्ञान का विज्ञान है वो दूसरों से सुनते हैं. So therefore he is an offender. इसलिए वो एक अपराधी He's है. hearing from all these other people and he's believing it. वो दूसरे लोगों से सुन रहे हैं और उस पर विश्वास भी रख रहे हैं. So I don't want to see him ever again. मुझे उनका फिर नहीं देखना है. That was a shock. Now Mukunda's there, he's listening to this. और मुकुंद वहाँ पे थे और सुन रहे थे ये सब. He's a distance away listening to what's happening. वो थोड़ी दूर रुक के देख रहे थे क्या हो रहा है. So the devotees didn't give up. लेकिन भक्तों ने ये प्रयास नहीं छोड़ा. "Oh, please give Mukunda another chance." मुकुंद को और एक अवसर दीजिए. So the Lord said, "Okay, he can come and see me after 10 million births." तो भगवान ने कहा कि हाँ वो मुझे आकर 1 करोड़ जन्म के बाद देख सकते हैं. Only 10 more million births and he can come and see me. सिर्फ 1 करोड़ जन्म और फिर वो आके मुझे मिल सकते हैं. And when Mukunda heard that, और जब मुकुंद ने सुना he became happy. बहुत खुश हो गए वो. After 10 million births, 1 करोड़ जन्म के after बाद 10 million births, और सिर्फ एक करोड़ जन्म के I बाद will see, I will see, I will see. मैं भगवान को देख पाऊंगा, देख पाऊंगा, देख He पाऊंगा. became happy, started to dance. बहुत खुश होके वो नृत्य करने लगे. And Lord Chaitanya realized what was happening. और चैतन्य महाप्रभु समझ गए क्या हो रहा है. He said, "All right, bring him immediately." ठीक है उनको लेके आओ, अभी लेके आओ. He was willing to wait that long to get the association of the Lord.
तो मुकुंद इतना रुकने के लिए तैयार थे भगवान का संग पाने के लिए। So he was very patient. तो वो बहुत ही धीर थे। So that's to achieve the full shelter of the lotus feet of the Lord requires pure loving devotion. तो भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करने के लिए हमें शुद्ध भक्ति की जरूरत है। So we have to practice that. हमें उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। Now, how do we do that? और कैसे करते हैं? By chanting Hare Krishna, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, Hare Rama, Hare Rama, राम Rama राम Rama, हरे हरे। and associating with and serving Vaishnavas. तो भक्तों का संग लेकर और उनकी सेवा करके। The more we serve the Vaishnavas and please the Vaishnavas by our association and service, the more we get the mercy of Krishna. हम जितना ज़्यादा भक्तों को का संग लेंगे और उनकी सेवा करेंगे उतना हमको भगवान की कृपा प्राप्त होगी। And the last thing is we have to tell everybody who we meet about Krishna. और आखिरी में हम जिस किसी को भी मिलते हैं उनको भगवान कृष्ण के बारे में बताना है। When Lord Chaitanya came to the house of the Korma Brahmin and stayed there for 4 days, Korma Brahmin, his whole family, served the Lord nicely for 4 days. तो चैतन्य महाप्रभु जब कुर्मा ब्राह्मण के पास आए थे, उनके घर पे आए थे और 4 दिन रुके थे, तो सबने उनकी बहुत अच्छी सेवा की। They took care of all of his personal needs. They cooked for him, everything. They centered their whole time serving Lord Chaitanya nicely for 4 days. तो 4 दिन तक उन्होंने भगवान के लिए बहुत अच्छा प्रसाद बनाया, उनको जो चाहिए था वो दिया और उनकी बहुत अच्छे से सेवा की। And then Lord Chaitanya had to leave after 4 days. फिर चैतन्य महाप्रभु 4 दिन के बाद वहाँ से So he left. तो चले गए वहाँ से। And then, but Lord Chaitanya looked back as he was walking and he saw the Korma Brahmin was following him. और चैतन्य महाप्रभु ने जब पीछे मुड़ के देखा तो देखा कि कुर्मा ब्राह्मण उनके पीछे पीछे आ रहे थे। He said, "Where are you going?" तो उन्होंने पूछा आप कहाँ जा रहे हैं? "I'm going with you." तो उन्होंने कहा मैं आपके साथ आ रहा You हूँ। can't go with me. You have your family. आप मेरे साथ नहीं आ सकते, आपका परिवार है। To hell with my family. I'm going with you. मुझे कोई परवाह नहीं है अपने परिवार की, मैं आपके साथ आऊँगा। He couldn't bear the separation. उन्होंने भगवान से दूर रहना उनको सहन नहीं हुआ। And Lord Chaitanya gave him some instructions. फिर चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें कुछ He said, "No, you go back and you stay with your family आप वापस जाइए और अपने परिवार के साथ रहिए and you worship me. और मेरी पूजा कीजिए। And everyone you see, tell them about Krishna. और जिससे भी आप मिलो उनको भगवान कृष्ण के बारे में बोलिए। Anyone you meet, teach him to chant the holy name." जिससे भी आप मिलते हो उनको भगवान का नाम जप He सिखाइए। said, "If you do this, अगर आप ऐसा करते हैं you will never lose my association. तो आप मेरा संग कभी नहीं छोड़ोगे And after some time, we will meet again." और कुछ देर के बाद हम लोग फिर मिलेंगे। So this is association and separation. तो ये जो संग है ये विप्रलम्ब भाव का संग है। By strictly following the instructions of the spiritual master, we can associate with Krishna in that mood. तो आध्यात्मिक गुरु के जो निर्देश दिए हैं उनको तंतोतंत फॉलो करने के बाद हम भगवान का संग ले सकते हैं। When Prabhupada was here in India, he was traveling with some of his personal servants. प्रभुपाद यहाँ पे अपने कुछ शिष्यों के साथ जा रहे थे। This was in the beginning when Prabhupada first came back to India after he had been preaching in the West. तो पाश्चात्य देश में प्रचार करने के बाद पहली बार ही प्रभुपाद वापस इंडिया में आए थे। So he had one cook who was Malati. Malati was Krishna Prabhupada's cook. तो मालती माता जी जो थे वो प्रभुपाद के लिए प्रसाद बनाते थे। So Prabhupada had to go to another place. प्रभुपाद को दूसरी जगह जाना था And he couldn't take Malati with him. और वो मालती माता जी को साथ नहीं लेके गया। So he left. तो चले गए। And Malati is now feeling separation from Prabhupada. और मालती माता जी प्रभुपाद से बहुत ही दूर अपने को पा रहे थे। And she wrote a letter to Prabhupada. और उन्होंने प्रभुपाद को एक पत्र लिखा। Prabhupada received the letter and it said, Srila Prabhupada, I'm feeling so much separation from you. It's unbearable. I want to be with you. तो उन्होंने प्रभुपाद को लिखा कि प्रभुपाद मुझे आपसे बहुत ही विपल भाव मतलब आपसे बहुत दूर महसूस कर रहे हूँ। And Prabhupada said something really important.
प्रभुपाद ने बहुत ही महत्व का एक चीज कहा। He's saying, you're chanting Hare Krishna, and I'm chanting Hare Krishna. We are together. तो प्रभुपाद ने कहा कि आप हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं और मैं भी हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहा हूँ, तो हम लोग साथ में हैं। Because on the spiritual platform, there is no real separation. It just appears to be. क्योंकि आध्यात्मिक स्तर पर कोई विप्रलम दूरी नहीं है, हम एक साथ हैं। Just like, and then Prabhupada went on to say, the spiritual master is not the body, but he is the principle of devotion to Krishna. So if you are following the instructions of the spiritual master, you are associating with the spiritual master. तो जो आध्यात्मिक गुरु है वो एक शरीर नहीं हो के जो भक्ति है उसका तत्व है, तो जब आप वो तत्व को फॉलो कर रहे हो तो आप आध्यात्मिक गुरु के साथ हैं। And there's persons who want to be with the spiritual master and want to be with the Lord, but they don't follow the instructions. लेकिन ऐसे लोग हैं जो आध्यात्मिक गुरु के साथ और भगवान के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन उनके निर्देशों का पालन नहीं करना चाहते। There's no association. उनका कोई संग नहीं। Yeah, physical proximity doesn't mean association. Association means by having the same mindset as the object that you want to associate with. तो संग लेना मतलब फिजिकली मिलना नहीं है। संग लेना मतलब जो जिनका आप संग लेना चाहते हो उनके निर्देशों का, उनके तत्वों का आप पालन कर रहे हो। Just like a king is sitting on the throne, जैसे एक राजा सिंहासन पे बैठे हैं and a fly falls on the king. और एक मक्खी आके उनके ऊपर बैठ जाती है। Now the fly is on the body of the king. लेकिन जो मक्खी है वो एक राजा के शरीर पे बैठी है। Is the fly associating with the king? लेकिन क्या मक्खी राजा का संग ले रही है? No, नहीं, there's no association. ऐसा ये संग नहीं है, Because the mindset is different. क्योंकि उनका मनस्थिति अलग है। So as we follow carefully the instructions of the spiritual master, we can associate with the spiritual master and with Krishna through those instructions. तो जब हम आध्यात्मिक गुरु के निर्देशों का पालन करते हैं तो हम आध्यात्मिक गुरु का संग लेते हैं और भगवान। It's the same thing what Krishna is saying here. You continue to worship me in separation, and after some time you will have the chance to be with me. तो यहाँ पर भगवान कृष्ण यही बता रहे हैं कि आप अपनी सेवा करते रहिए और कुछ देर के बाद आपको मेरा संग So if मिलेगा। we carefully follow the instructions of the spiritual master तो हम अगर ध्यान से आध्यात्मिक गुरु के निर्देशों and का पालन करते हैं engage enthusiastically in devotional service, और उत्साह से सेवाओं में पार्टिसिपेट करते हैं, that is non-different than association. फिर वो एक्चुअल संग से अलग नहीं है। Yasya Devi para bhaktir, yata Devi tata guru, tasyaikta kartita yata prakasananda maha. Those who have implicit faith in the instructions of both Krishna and the spiritual master, automatically all the imports of all Vedic knowledge is revealed in the heart directly. तो जिनके अंदर दृढ़ विश्वास है आध्यात्मिक गुरु और भगवान के निर्देशों का, उनके हृदय में भक्ति वैदिक ज्ञान प्रकाशित होता है। And what does Krishna say? What is Krishna's instructions? और भगवान के निर्देश क्या है? He says, "Manmana bhava mad bhakto, mam yaji mam namaskuru." तो भगवान क्या कहते हैं? मन मना भाव मत भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। Very good translation. Thank you. Expert. He's Dhaka. So what does that mean? That means Krishna says 4 things. If you do 4 things, that's bhakti. तो भगवान कहते हैं 4 चीजें करना है भक्ति में। Always think of me. हरदम मेरा स्मरण कीजिए। Become my devotee. मेरे भक्त बनिए। Offer prayers, worship me. प्रार्थना कीजिए, मेरी पूजा कीजिए। And offer your obeisances to me. और मुझे दंडवत कीजिए। You do these 4 things, that is bhakti. ये 4 चीजें अगर आप करते हो तो ये भक्ति है। And the most important thing is always to think of Krishna. और सबसे महत्व जो है वो है भगवान का हरदम। But how can you always think of Krishna? लेकिन आप भगवान का हरदम स्मरण कैसे कर सकते The हैं? mind is so restless. मन इतना चंचल है। And I don't have that much love for Krishna where I can think of Krishna all the time. और मेरे पास इतना प्रेम नहीं है कि मैं भगवान का हरदम स्मरण So करूं। what to do?
तो क्या करना चाहिए? Let me try. मुझे कोशिश करनी चाहिए, But the best way to try लेकिन सबसे अच्छी तरीका ट्राई करने is का, Hare Krishna, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Enechaya sari mayam nasi baralagi Hari nama maha mantra lao tumbi magi. Nah, this is the medicine for this age. The disease is forgetfulness of Krishna. The cure is remembering Krishna. तो जो हमारा रोग है वो भगवान को भूलना है, और उसको अगर हमें उसको ठीक करना है, औषधि करना है, तो वो भगवान का And the best याद करना। medicine is chant Hare Krishna, हरे Krishna, कृष्णा Krishna, कृष्णा Krishna, कृष्णा Hare हरे Hare, हरे, Hare हरे Ram, राम Ram, राम Ram, राम Ram, हरे Hare. हरे। Chant, chant, chant. No time. Chant, chant, chant. Always remember Krishna. Practice that. And if you practice, it becomes easy to remember Krishna always. तो हरदम कोशिश करते रहना चाहिए, और जब हम कोशिश करते रहेंगे तो फिर भगवान का स्मरण करना And if you बहुत remember आसान है। Krishna always, you're not part of this world anymore. You're actually on your way back to the spiritual world. तो जब हम भगवान को हरदम याद करते हैं तो हम ये भौतिक जगत में नहीं रहते, और ऑलरेडी भगवान के साथ रहते हैं। Hare Krishna. Prashna? Okay, we get. Hare Krishna. Yesterday I take you back up to 1999. Today also I will take you back to 2005 to 2006. When that was the question is there, when you met second time and you give me first prize for God, back to Godhead. What was the question? No, he's asking. Okay. I have not seen Lord Krishna directly and their mercy, but I believe mercy because of you. You have tell and I believe, but I take your mercy directly. I am taking your mercy. So question is there. My mercy is Prabhupada's mercy. You go to Prabhupada, you get all the mercy. हरि बोल। You say if you wish to have mercy, you have to serve Vaishnava. devotee. Yeah. So I wish you give opportunity me on behalf of my center, visit our center at Koregaon. Well, you're asking me to serve you. I wish to serve you. Well, okay, but if you wish to serve me, I'll tell you how to do it. You don't tell me how I should serve you. That's not service. That's business. If you ask me to serve you and you tell me how I can serve you, that's not serving me. That's serving you. Understand? If you want to know how to serve, you have to find out what the person wants. That's service, right? Second question. महाराज, Yeah, so when you come, you ask, what can I do? Not what I can do for you. Then you're asking me to serve you. I don't mind serving you, but I don't have time right now. So when you ask someone to serve you, if you want to serve someone, you ask, what can I do for you? And that person will tell you. So come and join the temple and become a brahmachari and finish. Yeah. Are you married? I will try. Are you married? All right, you bring your wife too. She can come on that side, you can sit on this side. In the morning program, Slowly, yeah, we have to, slowly. But if you go too slow, you don't get there. You have to go steady. Steady is best. What I did last year is not what I'm doing now. What I'm doing now
I don't want to be in that position. I want to do more than what I'm doing now. I want to chant better rounds. I want to serve the devotees more. I want to learn more about the shastras. I want to offer more service. Devotees always thinking, how can I do more? How can I do more? Not like everything is okay. Yatapat, tatapat, I'm okay, you're okay. Did you get all that? Okay. तो प्रभु जी का प्रश्न था कि महाराज हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, लेकिन आप आइए हमारे सेंटर में। तो महाराज कह रहे कि अगर आप जब भी हम सेवा करना चाहते हैं तो हमें पूछना चाहिए कि मैं कैसे सेवा कर सकूं, हमें बताना नहीं चाहिए कि आप ऐसे सेवा करिए। फिर ये तो बिजनेस हो गया। तो महाराज से सेवा मांगने से अच्छा है हम महाराज को पूछे कि आप क्या चाहिए आपको ऐसे। ठीक है। Question is there. In the morning program, we get Tulsi Patra. In Charnamrut, we get Tulsi Patra. अच्छा. But before death, we take Tulsi Patra. After death, if I am devotee or not devotee, it is forcefully given Tulsi Patra. What is difference between Tulsi Patra getting before death or after death? Well, getting Tulsi Patra after death. Well, somebody else will give it to you. You won't be able to get it. तो प्रभु जी का प्रश्न ऐसा है कि जो तुलसी पत्र है हम लोग लेते हैं ऐसे, पहले खुद के हाथ से लेते हैं, और अगर बाद में मृत्यु के बाद कोई हमारे को देता है तो इसमें क्या संबंध है? Yeah, so you get it now before you die. तो महाराज कह रहे हैं कि अभी लेना ज्यादा अच्छा है हमारा मरण से पहले। Yeah, and if you receive it now, then you'll get full mercy when you die. अगर हमको अभी मिलता है तो हमें बहुत कृपा प्राप्त होती है। So we give it before you die. हमें मृत्यु से पहले कोशिश करना चाहिए। But you don't die anyway. Nobody dies. कोई मरता नहीं है एक्चुअली वैसे। The soul is eternal. आत्मा अमर है। The body dies. सिर्फ शरीर नष्ट होता है। Hare Krishna. Thank you. Nice to see you again. If I get it, I will try to serve you in some way. Yeah, we have a question back there. Hare Krishna Maharaj Ji. We are very delighted to have you here in temple, and thank you for providing us your association. Thank you for what? Providing us your association. I'm trying to bring Prabhupada here, that's all. Prabhupada, we're simply trying to represent Srila Prabhupada, that's all. So my question was, whenever we do some kind of service, we tend to develop ego in us, that I did this service, मैंने ये किया है, I did this, and that ego doesn't go very easily. So what can we do so that we don't develop ego after doing service or while doing service? तो इनका प्रश्न है कि जब भी हम कोई सेवा करते हैं तो हमारे में अहंकार आता है, और वो अहंकार को कैसे दूर करें कि ये सेवा मैंने की है। That's a very good question, and it's a very important question. बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। Well, we have to understand that, as Krishna says in the Bhagavad Gita, he says, Rasoham apsukunsaya prabhaspisa sisurya pranava sarvavedishu sabdike purusham nishu. That last line, purusha navakam neshu, means that I am the ability in everyone. तो हमें ये समझना चाहिए कि भगवान जैसा भगवत गीता में कहते हैं कि सब की जो काबिलियत है वो मैं हूँ। Anyway,
Rasoham apsakunteya prabhasmi sarisurya pranava sarvavedeshu sabdike purusham meshu. That I am the ability in all living entities. What Krishna is saying is that anything you can do is simply coming, I'm giving you that ability to do it. भगवान कहते हैं कि आप जो कुछ भी करते हैं वो भगवान कहते हैं कि मैं आपको वो काबिलियत देता हूँ कि आप वो कर सकें. Krishna is the beach, he is the seed of all activities. कृष्ण बीज है, वो सारी गतिविधियों के बीज हैं. Krishna says in the Bhagavad Gita also, Sarvashita hamriti sani visto, mata smirti jnana mahopohanam cha. If you want knowledge, I give you knowledge. If you want remembrance, I give you that. If you want forgetfulness, I help you to forget. So whatever you desire, Krishna will provide what you need to fulfill that desire. That's Krishna. भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि अगर तुम्हें ज्ञान चाहिए तो मैं तुम्हें वो ज्ञान देता हूँ, तुम्हें स्मृति चाहिए, स्मृति में विस्मृति भी मैं ही देता हूँ. You can do something, but you can't make the results happen. It's not possible. तो हम कर सकते हैं लेकिन उसका फल हम नहीं कंट्रोल कर सकते. You can try, but you think, well, I did this, but you didn't do this. You had a desire, and you tried your best, and it came out in a certain way, only because of the mercy of the Lord. That's all. तो हमें लगता है कि हमने किया है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हम सिर्फ इच्छा करते हैं और फिर बहुत सारी चीजें उसमें. So Krishna is giving us intelligence. He's giving us ability. He's giving us facility. He's giving us everything. तो भगवान हमें बुद्धि दे रहे हैं और सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रस्तुत करके दे रहे हैं. So we give credit to Krishna. We give credit to the spiritual master. तो हमें भगवान और आध्यात्मिक गुरु को श्रेय देना चाहिए. That's why we say all glories to Srila Prabhupada. इसलिए हम कहते हैं कि all glories to Srila Prabhupada. Not like, well, 90% glories to Prabhupada and 10% for me. लेकिन हम ऐसा नहीं बोलते कि 90% ग्लोरीज प्रभुपाद के लिए और 10% मेरे लिए है. Not like that. All glories to my spiritual master. All glories to the association of devotees. तो हम कहते हैं कि सारी ही जो ग्लोरीज हैं वो भक्त. And if you want to take that answer a little farther, you'll find that Krishna explains in the Bhagavad Gita, there are 5 factors of action. तो आगे और भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि किसी भी कार्य के पीछे 5 कारण होते हैं. Let's see, the 5 factors are the time, the place, the endeavor, the super soul is 4 and 1 more. And you. So in every activity, you are 1/5 of the activity. That's all. तो कोई भी कार्य करते वक्त 5 कारण दिए हुए हैं भगवद गीता में और उसमें से हम सिर्फ एक हिस्सा ही है उसका. So if you take credit, you're cheating because it's so. तो अगर हम उसका श्रेय लेते हैं तो हम धोखा दे रहे हैं. So you, even if somebody says, "Oh, thank you, you did nice service," then you just think, "Well, it was the grace of my spiritual master. It was due to the association of devotees that I can do anything." तो अगर कोई आके कहता भी है कि आपने बहुत अच्छी सेवा की है तो भी हमें सोचना चाहिए कि आध्यात्मिक गुरु की कृपा से हम कुछ कर पाए. Krishna says, "You're not the doer." कृष्ण कहते हैं कि आप नहीं हो करता. Kartaham iti manyate. Ahankara vimudatma. Kartaham iti manyate. Ahankara means false ego thinks I'm the doer. करता मतलब अहंकार की भावना जो है. The only thing we can do is desire. हम सिर्फ इच्छा कर सकते हैं. And by the quality of our desire, we connect with a particular energy, and through that energy, things develop. और हमारी इच्छा किस प्रकार से है उस प्रकार से हम उस प्रकार की शक्ति से कनेक्ट होते हैं और सेवा कर सकते हैं. If we connect with the material world, we connect with either the mode of passion, the mode of goodness, the mode of ignorance. अगर भौतिक जगत में है तो फिर हम लोग सतोगुण रजोगुण और तमोगुण से संबंधित हैं. Depending on our desire,
the quality of our desire, we connect with one of those modes. और हमारी इच्छा के हिसाब से इसमें से किसी गुण से हम संबंध And रखते by हैं। the power of that mode, things starts to develop, and then that is material activity. और फिर उस गुण के हिसाब से फिर चीजें आगे बढ़ती But हैं। in devotional service, when we work under the guidance of the spiritual master, we're connecting with the spiritual energy, not the material energy. और जब हम आध्यात्मिक गुरु के अंदर सेवा करते हैं तो हम आध्यात्मिक शक्ति के अंदर हैं। And we are not the controller of the spiritual energy. We are simply receiving that mercy of the spiritual energy to carry out our service. That's all. और हम उसके नियंत्रक नहीं हैं, हमें सिर्फ वो मिली है आध्यात्मिक शक्ति जिससे हमारी सेवाएं चलती रहे। So if we take credit falsely, we are building the wrong idea that I did it. तो हमें किसी भी चीज़ का श्रेय नहीं लेना चाहिए। अगर ले रहे हैं तो हम गलत संकल्पनाएं बना रहे हैं। It's like I'm giving class, right? जैसे महाराज अभी क्लास दे रहे हैं। But if nobody was here, what's the use of my class? So you have to be here for me to give class. तो आप सबका यहाँ रहना जरूरी है मेरे क्लास देने के And लिए। then I have to be asked by the devotees to give class. और भक्तों द्वारा पूछा जाना चाहिए मुझे क्लास देने के लिए। So there's so many things that come, and if I have to remember what Prabhupada told me in order for me to give class. और मुझे याद रहना चाहिए कि प्रभुपाद ने क्या कहा है तब मैं क्लास दे पाऊंगा। So if I take credit, then I'm a fool. तो अगर मैं श्रेय लेता हूँ तो मैं एक मूर्ख हूँ। Same thing. Is that clear? Yeah. So when you get credit, then you just pass it on to your spiritual master, to the assembly of devotees. Just don't keep it, just pass it on. Oh, thank you very much. All glories to my spiritual master. All glories to the association of devotees. It's by their mercy I'm able to do anything. तो जब भी हमें प्रशंसा मिलती है तो हमें वो गुरु महाराज को दे देना चाहिए और उनकी ही कृपा से ये सब संभव है। Prabhupada would say, even Prabhupada would talk about himself. प्रभुपाद हरदम कहते थे, खुद के बारे में बताते थे। People would praise Prabhupada for what he did. प्रभुपाद की बहुत प्रशंसा करते थे कि उन्होंने जो किया है। And Prabhupada would say, well, I don't know what I did, but I know one thing. I'm simply trying to follow the instructions of my spiritual master. That's all. तो प्रभुपाद कहते थे कि मुझे नहीं पता मैंने क्या किया है, लेकिन मैं सिर्फ अपने गुरु महाराज के निर्देशों का पालन करने की कोशिश कर रहा हूँ। And because I followed the instructions of my spiritual master, it became successful. और क्योंकि मैं अपने गुरु महाराज के निर्देशों का पालन कर रहा हूँ, इसलिए ये सब श्रेय है। So Prabhupada saying, giving all credit to his spiritual master for whatever he did. तो प्रभुपाद सब अपने गुरु महाराज को श्रेय दे रहे हैं जो भी उन्होंने किया है उसके लिए। So we can learn from that also. तो हम प्रभुपाद से सीख सकते हैं। Even the great souls, they give credit to Krishna and to their spiritual masters. तो हम देखते हैं शुद्ध भक्त भी भगवान और उनके आध्यात्मिक गुरु को पूरा श्रेय दे रहे हैं। And actually, everyone is giving credit to Krishna. और सब भगवान कृष्ण को श्रेय दे रहे हैं। Krishna says, I know everything that happened in the past. तो भगवान कहते हैं कि मुझे सब पता है जो भूतकाल में हुआ है। I know everything that's happening in the present. अभी जो वर्तमान काल में जो चल रहा है वो मुझे पता है। I know everything that will happen in the future. और जो भविष्य में होगा वो भी मुझे सब पता है। I know all living entities. मैं सब जीवों को जानता हूँ। But me, nobody knows. और पर मुझे कोई नहीं जानता। Yeah. So Krishna is everything. कृष्ण सब जानते हैं। He works through his different energies to make things happen. Krishna is the supreme controller. तो भगवान जो है वो परम नियंत्रा है। And the supreme source of mercy. और कृपा के सबसे उच्च स्तोत्र है। Yes, Vedant. Hare Krishna. Maharaj, thank you, Maharaj. You are a nice association for us, very enlightening and inspirational. So, Maharaj, my question is, what is the difference between devotion of the Brahmana's wife and the gopis? Because both are
want to sacrifice everything for Krishna, but Lord Krishna reject Brahmana's wife. Krishna told him that you went home, but he accepted gopis. So what is main difference between the devotion of the gopis and the Brahmana's wife? प्रभु जी का प्रश्न है कि ब्राह्मण पत्नियों के प्रेम जो भक्ति है उनकी भक्ति में और गोपियों की भक्ति में क्या संबंध है कि दोनों ने ही भगवान के प्रति सब कुछ निछावर किया लेकिन भगवान ने उनको वापस भेज दिया और गोपियों को स्वीकार किया. If I can remember correctly, the mood of the Brahmana's wives is that they wanted to serve Krishna in a certain way. They wanted to be with Krishna, to serve Krishna in a certain way. The gopis had no desire to serve Krishna in a certain way. They just wanted to please Krishna, that's all. तो ब्राह्मण पत्नियों का जो था उनको भगवान की एक विशेष प्रकार से सेवा करने की इच्छा थी लेकिन गोपियों का ऐसा कुछ नहीं है भाव. Both want to be with Krishna. दोनों ही भगवान के साथ रहना चाहते थे. There was one Brahmin's wife who was stopped by her husband from going, and she gave up her life. That was exemplary because she couldn't go to be with Krishna with the other Brahmin's wives. She was forced to stay home, and she couldn't. I think she gave up her life because of that. Is that correct? I think that's part of that. That was already part of this pastime. You read that already, yeah. So they're almost on the same level of the gopis, but the mood is different. वो गोपियों के ही स्तर पर है लेकिन सिर्फ उनका भाव अलग है. They had some personal desire, but the gopis had no personal desire. The gopis just wanted to please Krishna, that's all. The wives wanted to be with Krishna because they also wanted to be happy with being with Krishna. They had some desire, they had some personal desire. So that's why Krishna said here, fix your mind on me, increase your love for me. He didn't say for the gopis increase their love. And he said, very soon you will achieve me. So their love wasn't as selfless as the gopis. तो ब्राह्मण पत्नियों का निजी इच्छा थी उनकी लेकिन गोपियों की ऐसी कोई इच्छा नहीं थी. तो यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि उनको कह रहे हैं कि आप अपना प्रेम मेरे लिए बढ़ाइए लेकिन गोपियों के लिए ऐसा कुछ उन्होंने नहीं कहा है. Okay. So Mataji, question. हरे कृष्णा महाराज सबको चरणों में दंडवत प्रणाम. मेरा एक जानकारी है जैसे कि भागवत में चैतन्य चरितामृत में थोड़ा बहुत लेक्चर तो सुनती हूँ गुरु महाराज से. तो मेरा एक छोटी सी भक्ति का इच्छा है जो गोपाल चंपू में जीव गोस्वामी गुरु जी ने लिखा है उस बारे में मैंने थोड़ा को भी सुना नहीं. तो मेरा इच्छा है थोड़े कुछ छोटी से वर्णन आप सुनाए तो जीव गोस्वामी गुरु जी का बारे में. She's speaking Bengali? Bengali? Huh? No, Hindi only. Hindi? Oh, okay. It sounded... She wants to know about Gopal Champu, which is written Jiva Goswami's. Jiva Something Goswami's? about, yeah, something about. Gopal Champu? Jiva Goswami? Yes. You've read it? Have you read it? आपने पढ़ा? नहीं, मैंने कुछ भी कभी सुना नहीं है. भागवतम में जैसे लेक्चर सुना, गीता में सुना, लेकिन She has not. कभी भी सुना नहीं. तो मेरा थोड़ी सी इच्छा है इसका भगवान के बारे में क्या लिखा है वो जानकारी. It's almost like the 10th canto of the Srimad Bhagavatam, but it includes other pastimes of Krishna which are not in the Bhagavatam. तो इसके अंदर भागवतम का 10th स्कंद के जैसा है ये जिसमें भगवान की जो लीला है वहाँ वर्णित नहीं है वो यहाँ पे गोपाल चंपू में. But it's pure nectar. लेकिन पूर्ण अमृत है वो. And there are two persons. दो व्यक्ति हैं. And they're called eulogizers.
युग eulogizers, people who come and then they're professional glorifiers. कवि जो आके Yeah, मतलब गाते yeah. हैं. They come, they make poetry and song glorifying Krishna. वो आके बहुत सारी कविताएं पढ़ते हैं भगवान की प्रशंसा करने के So there लिए. were two brothers, और दो भाई थे and they would appear every night in the assembly house of Nanda Maharaj, और वो नंद महाराज के वहाँ प्रकट होते थे and they would sing and glorify Krishna's pastimes. और वो भगवान के गुणगान करते थे. And all the residents of Vrindavan would come and listen. और सारे वृंदावन वासी वहाँ आकर सुनते थे. And these two brothers would go back and forth. One would speak, the other would speak, and it was very sequential. They would mention all of Krishna's pastimes in Vrindavan. और भगवान की सारी कथाओं को वो दोनों भाई एक एक करके बहुत अच्छे से विवरण करते थे. But towards the end, लेकिन आखिरी में the intensity of the mood of separation was very strong. तो जो विप्रलम्ब भाव था वो बहुत ही तीव्र था. And that's given a lot of emphasis in Gopal Champu. और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा महत्व दिया हुआ है गोपाल चंपू में. How Krishna was feeling so much separation from the residents of Vrindavan. कृष्ण कैसे वृंदावन वासियों से विरह महसूस कर रहे थे. So it goes into the mood of Krishna's feelings of separation. He had to finish killing all of the demons before he could come back to Vrindavan to be with his devotees. But at the same time, he wants to come back, and he can't wait to come back to be with his devotees. But he has his business of killing the demons first. तो भगवान जाके अलग अलग असुरों का वध करते थे और वध करने के बाद ही वो आके वृंदावन वासियों से मिल सकते थे. तो It's a wonderful book. It's big. It's about 700 pages. बहुत बड़ी बुक है, बहुत अच्छी बुक है. 700 करीब पेज हैं इसमें. So I read it during lockdown. I was locked down with Gopal Champu. Good way to get locked down. तो महाराज ने लॉकडाउन में वो पुस्तक पढ़ी है. महाराज कह रहे हैं मैं वो बुक के साथ लॉकडाउन था. The first two chapters are very difficult to understand. पहले जो दो अध्याय हैं वो बहुत ही कठिन है समझने के लिए. I had to start the book about 5 times. I couldn't get past the first 2 chapters. महाराज कह रहे हैं मैं 5 बार वो पुस्तक पढ़ने पहले 2 अध्याय को पार करना मुश्किल है. So difficult. But I kept reading it, and finally I made it to chapter 3. और फिर बार बार पढ़ के फिर वो 2 चैप्टर. It's so beautiful in poetic expression. बहुत ही वो सुंदर और कविता युक्त है. It's everyone should read it. सबने उसे पढ़ना चाहिए. It's really, it's Bhagavatam in a very condensed form. तो संक्षिप्त रूप में भागवतम है वो. Yeah, please read it. पढ़िए उसको. Yes. Okay. Hare Krishna. I have one question. Thank you for wonderful class. First, you spoke about Akrura's pastime right now in the class. Because of Akrura, the gopis get hurt and they curse him. So sometime doing some seva, And you get cursed by your authority. devotee get hurt, and because of which devotee don't want to do certain kind of seva, like managerial seva, because of which devotee gets hurt. Or so, what should be the mood in such cases, doing such kind of seva? Because you're getting chastised for not doing it, you want to do a different service? Is that it? No, because of our services, some duty gets hurt because things not going according to their way. That's why they get hurt. Oh. Well, do it their way. If it's your authority, you should think, oh, maybe I can improve. I should listen to my authority. They're giving me good advice on how to do it better. That's good. We should accept some feedback to improve our service.
But sometimes we might say, well, this is the way I'm doing it. Can you help me to understand how I should do it? So you ask. If there's some disagreement, you can ask. Akrura got cursed because he didn't speak to the gopis. He didn't even, he just took Krishna without, he spoke to Nanda Maharaj and the cowherd boys and Krishna Balaram, but he didn't speak to the gopis. So they got, that's what the reason why they cursed him, because he didn't even, he just took Krishna without, he just ignored the gopis. That was his fault. Don't ignore your authority. We should do service in a way that is pleasing. And if our authorities are saying, well, maybe it's not right the way you're doing it, you can do it like this, then we should accept that. Why not? Service is for Krishna, and the authorities are there to help us understand how best to serve. So we can take that as good instructions and learn from that. But the authorities shouldn't be heavy on the devotees if they're doing it wrong. Like, hey, you rascal, you don't know what you're doing, you know. Not like that. My dear sir, I see you're trying to serve, but it's not exactly the way it should be done. Please listen. So, did you get all that? Yes. I'll try, Maharaj. So, प्रभु जी का प्रश्न था कि कैसे कभी-कभी हम अक्रूर जैसे सेवा कर रहे थे, लेकिन उनको शाप मिल गया गोपियों द्वारा, तो कैसे जब भी हम भी कोई सेवा करते हैं तो भक्त नाराज हो जाते हैं या हर्ट हो जाते हैं, तो कैसे करना चाहिए? तो महाराज कह रहे हैं कि अक्रूर को शाप इसलिए मिला कि उन्होंने गोपी से बात नहीं किया। तो जब हम सेवा करते हैं तो हमें हमारी जो अथॉरिटी है उनसे पूछना चाहिए कि कैसे करना है, और अथॉरिटी को जैसे चाहिए वैसे हमें सेवा करने की कोशिश करना चाहिए। Yeah, we want to serve nicely, so if we get corrected, that's good. But we should be very, those who are correcting shouldn't blast the devotees, because that's not good. तो हमें जो अथॉरिटी है उनका सुनना चाहिए, उसी साथ अथॉरिटी को भी हार्श नहीं होना चाहिए, मतलब उनको एकदम बहुत ही क्रूर वे में नहीं डील करना चाहिए। Any other questions? Thank you. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Gaur Premanande, हरे कृष्णा। सो महाराज जी ने इतने सुंदर रूप से हमें यहाँ पे इतना एसोसिएशन दिया है। आज शाम को 7:30 बजे और कल सुबह 8:15 बजे फिर से महाराज जी का संग हमें मिलेगा। तो आज के इस श्रीमद् भागवत वर्ग के लिए हम महाराज जी को धन्यवाद देते हैं 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल हरि